बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Alright, so we'll be working on the displacement time graphs. अच्छा, ये distance time graphs नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये displacement है। सही, जैसे ऊपर वाले graphs velocity time graphs थे, उसमें डायरेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट थी, तो इसमें भी आपके पास origin का रेफरेंस इम्पोर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स के अंदर अगर हम अपना जनरल एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करें फॉर अ रेफरेंस, समझने के लिए कि भाई x क्या है, y पे क्या है, so you'll see कि भाई if I have this graph over here, we have displacement on the y-axis, we have time on the x-axis. तो हमारे ग्राफ का x-axis हमें टाइम बताता है, हमारे ग्राफ का y-axis हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है। सही, अगेन ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव की अहमियत को समझिएगा। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे ये आपका ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ओरिजिन से राइट साइड पे जितनी मूवमेंट है वो सब पॉजिटिव, और ओरिजिन से पीछे अगर आप निकल जाते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन से आगे है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन से पीछे मौजूद है। उसके बाद वी हैव द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ एंड वी हैव द एरिया ऑफ द ग्राफ। अगर हम ग्रेडियंट की बात करें यहाँ पे, तो क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो अगर मैं किसी भी ग्राफ को यहाँ पे ड्रॉ करूं मिसाल के तौर पे, मैंने ऐसे एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, तो ग्रेडियंट हमें वेलोसिटी बताता है। और ये बात कैसे प्रूव होती है? ये बात ऐसे प्रूव होती है कि ग्रेडियंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x होता है। हमारे पास y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है एंड ऑन द x एक्सिस वी हैव टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा s बाय डेल्टा t, दैट्स वेलोसिटी। सो द ग्रेडियंट टेल्स यू वेलोसिटी। लेकिन अगर हम एरिया की तरफ जाएं तो एरिया हमारा इनसिग्निफिकेंट है, इट वोंट टेल अस एनीथिंग। उसकी वजह यह है कि जब आप एरिया डिटरमिन करेंगे, मिसाल के तौर पर इस ट्राइंगल का आप एरिया निकालते हैं ग्राफ में, तो आप बेस इनटू हाइट यानी टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो। देयर इज नथिंग एज डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम कुछ भी नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी आपने देख ली, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज नथिंग, इट्स इनसिग्निफिकेंट, इट वोंट रिटर्न यू एनीथिंग। इस वजह से एरिया ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ऑफ नो यूज, दैट्स व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू डिटरमिन इट, और ना कभी आपसे एग्जामिनर इसके बारे में पूछता है। अब हम जरा इसके केसेस करेंगे जैसे हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केसेस किए थे ना। बस जिन बातों का आपने ख्याल रखना है, वो ग्रेडियंट्स की अंडरस्टैंडिंग आपको याद रखनी चाहिए कि भाई अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ग्रेडियंट 0, अगर लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो ग्रेडियंट पॉजिटिव, अगर लाइन नीचे की तरफ आ रही है तो ग्रेडियंट नेगेटिव। ठीक है, वर्टिकल हो गई लाइन तो ग्रेडियंट इनफाइनाइट, जो कि खैर है ऑब्वियस सी बात है। अगर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रही हो, भले ऊपर जा रही हो नीचे जा रही हो, तो ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा होगा, इसमें पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा होगा और इसमें नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा होगा। लेकिन क्योंकि ग्राफ वर्टिकल हो रहा है, इस वजह से ग्रेडियंट इंक्रीज होता चला जाएगा। और इसी तरह अगर ग्राफ हॉरिजॉन्टल होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है। इधर पॉजिटिव में डिक्रीज क्योंकि आप ऊपर जा रहे थे, और इधर नेगेटिव के अंदर डिक्रीज। तो ग्रेडियंट की वैल्यू कम हो रही होती है जब आप हॉरिजॉन्टल पे आते हो, क्योंकि देखो ना, हॉरिजॉन्टल इज 0। सो इफ योर ग्राफ इज बिकमिंग हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब आपका ग्रेडियंट 0 की तरफ जाएगा। और इनफिनिट वर्टिकल जो होता है, बिल्कुल वर्टिकल लाइन, वो इनफाइनाइट होते हैं उसके ग्रेडियंट। मतलब अगर आपका ग्राफ वर्टिकल होता जा रहा है तो इसका मतलब आप इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हो अपने ग्रेडियंट पे। अब जरा पहला केस शुरू करते हैं।
एक सेट बना के इसको कॉपी कर लूंगा क्योंकि ये मुझे बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा ना। तो ये हमारे पास ग्राफ हो जाएगा। हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट से जजमेंट करेंगे और उसके बाद ग्रेडियंट यानी वेलोसिटी की जजमेंट करेंगे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने पास। बार बार यूज होगा। So to start off with the first graph over here, ये मैंने अपना सबसे पहला ग्राफ ड्रॉ कर दिया। So a horizontal line on the x-axis. We have a horizontal line on the x-axis. देखिए, if you read this graph, you'll see that the displacement is zero throughout. See, the displacement is zero. And if you look at the gradient, it's a horizontal line, so the gradient is also zero. This means the velocity is also zero. क्योंकि जो कुछ gradient के साथ हो रहा होगा, वो velocity के साथ होगा. So the gradient is zero, so is the velocity. तो यहाँ पे आप इस बात को conclude करते हो कि the object is at rest at the origin. The object is at rest at the origin. Starting point के ऊपर ही वो object rest पे वही रुका हुआ। अब इसी का एक थोड़ा different केस देखिए। ये ग्राफ्स थोड़े से मुख्तलिफ होंगे। ये मैंने इधर ड्रॉ कर दिया इनको। तो डिस्प्लेसमेंट और इनके साथ ग्रेडियंट या वेलोसिटी की बात। इसी तरह यहाँ पे नीचे वाले ग्राफ के भी डिस्प्लेसमेंट और उसके साथ ग्रेडियंट और वेलोसिटी की बात। तो सबसे पहले ऊपर वाले पोर्शन के एनालिसिस करो। एक मिनट रुकिएगा। तो अगर हम ऊपर वाले पोर्शन के एनालिसिस करें, इसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू है पॉजिटिव में। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ मैं +3, so the displacement is constant and it's positive, see, not changing. और ग्रेडियंट देखें तो ग्रेडियंट जीरो है। ग्रेडियंट आपके पास यहाँ पे जीरो है, हॉरिजॉन्टल हुआ है ना बिल्कुल ग्राफ, देयर इज नो ग्रेडियंट एट ऑल। तो यहाँ पे जो मतलब आया इसका ये है कि भाई द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट अगेन, वेलोसिटी जीरो है। लेकिन पिछले केस से थोड़ा डिफरेंट है ये। See, the object is at rest but not at the origin, it's 3 meters ahead of the origin.
the object is at rest 3 meters ahead of the origin. See, मैं starting point से 3 मीटर आगे वो रेस्ट में, और जो नीचे वाला ग्राफ है अगर आप उसको ऑब्जर्व करें, डिस्प्लेसमेंट उसका भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट उसका भी कांस्टेंट है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रही है, लेकिन नेगेटिव में, मतलब -5 की एक ही वैल्यू है, वक्त के हिसाब से वही एग्जिस्ट कर रही है। तो जो उसका जो ग्रेडियंट हुआ या उसकी जो वेलोसिटी हुई, वो तो आप यहाँ पे ग्राफ के ग्रेडियंट से देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है, 0 है, तो ये भी ऑब्जेक्ट रेस्ट वाला ही है। The object is at rest, सही, लेकिन it's 5 meters behind the origin, कि वो रुका हुआ तो है लेकिन ओरिजिन से 5 मीटर पीछे है। अब यहां पे थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस ये आपके पास ग्राफ आ गया, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी इसके भी है। आसान हो रही है अभी, let's do one thing, let's take a break, we'll return at 7:40, सही, 7:40 पे हम रिटर्न करेंगे, नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं मगरिब की, अभी रिकॉर्डिंग वगैरह को पॉज कर रहा हूँ, तो उसके बाद फिर यह है कि इस केस की डिस्क्रिप्शन के ऊपर हम आगे चलेंगे। Bismillahirrahmanirrahim. So we ended a lesson on the idea of this graph. हमने अभी सिर्फ ड्रॉ किया था, इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर हम बात करना शुरू करें। पहले तो ऊपर वाले पोर्शन के ग्राफ के ऊपर बात करते हैं। So if you see at the displacement in this case, displacement पॉजिटिव है क्योंकि आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव वैल्यू सारी आ रही हैं, और डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो ग्राफ का ग्रेडियंट है वो कांस्टेंट है, पॉजिटिव है लेकिन कांस्टेंट है। पॉजिटिव ऐसे कि मैंने आपको बोला था ना, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ग्रेडियंट आपका पॉजिटिव, और कांस्टेंट है क्योंकि एक लाइन है, इसका ग्रेडियंट में ना इंक्रीमेंट है ना डिक्रीमेंट है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी आपको मिल रही है, आप ये बोलेंगे द ऑब्जेक्ट इज मूविंग at constant velocity ahead of origin, see, origin से आगे यानी पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी में वो मूव करता हुआ जा रहा है। सही, ऑब्जेक्ट इज मूविंग at constant velocity ahead of the origin in the positive direction, ये भी लिख सकते हैं। या away from origin in the positive direction, इस तरह लिख दो जो आपको ज्यादा आसान लगे समझना, कि भाई दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका ओरिजिन है, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन से अवे जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर, पॉजिटिव वेलोसिटी। नीचे वाला ग्राफ इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, मैग्नीट्यूड से पहचानिएगा, डायरेक्शन आपको सिर्फ ये बताती है कि उसकी लोकेशन कहाँ है। तो अगर आप मैग्नीट्यूड देखें तो आपको अंदाजा होगा कि डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होता चला जा रहा है, लेकिन नेगेटिव है, और जो ग्रेडियंट है वो भी कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है,
क्योंकि आपका ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। मैंने बोला था ना जब ग्राफ नीचे जा रहा हो तो ग्रेडियंट नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी का मामला है, ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। सी, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के ऊपर ट्रैवल कर रहा है, लेकिन इट्स मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन इन द नेगेटिव डायरेक्शन, वो ओरिजिन के पीछे की तरफ जा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी away from origin, say in negative direction. See, if this is the origin, the starting point, तो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ जा, ओरिजिन के पीछे, उसकी डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है और वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करता चला जाए कांस्टेंट वेलोसिटी। इस पार्ट में अगर कोई कंफ्यूजन है किसी को तो वो बिल्कुल मुझसे पूछ ले, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ केस, अच्छा ऊपर वाले केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीड जो है उसकी, उसकी वेलोसिटी जो है वो कब ज्यादा है, जब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है या जब वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है? वेलोसिटी कहाँ पे ज्यादा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते हुए या नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करते हुए? ये बता सकते हो? ठीक है, ठीक है। वेलोसिटी का अंदाजा कैसे लगाया जाता है? ग्रेडियंट देख के ना, ग्राफ का ग्रेडियंट देखिए यहाँ पे, जिसका ग्रेडियंट ज्यादा मतलब जो ज्यादा वर्टिकल होगा ग्राफ, उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर किसका ग्रेडियंट ज्यादा है? हाँ भाई शहीर एंड अफरा। ठीक है अफरा, गट योर आंसर। शहीर, व्हाट अबाउट यू? जी सर, क्या कहते हैं, आई थिंक दोनों का इक्वल ग्रेडियंट है। ठीक है, यहाँ पे the negative one has a greater gradient. See, this means that when your object is moving in the negative direction, it's moving faster. नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करते हुए आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्पीड के ऊपर मूव कर रहा है। तो ये चीज है। पॉजिटिव में उसका ग्रेडियंट कम है, इट्स मोर हॉरिजॉन्टल, सही, सो द स्पीड इज लेस। Now, in the fourth case, you're going to draw some similar graphs.
अब यहाँ क्या, हम अगर ऊपर वाले ग्राफ को ऑब्जर्व करें, so the displacement is still positive but it is decreasing. You can see that the graph is going downwards, it's getting zero with respect to time. इसकी displacement जो है वो वक्त के साथ साथ कम होती चली जा रही है, लेकिन पॉजिटिव है। आप दिख रहा है ग्राफ ऊपर की पोजीशन में, the gradient of the graph is constant still, but the graph has a negative gradient because the graph is going down. मैंने पहचान बताई थी कि अगर ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है तो ग्रेडियंट नेगेटिव होगा, ग्राफ ऊपर की तरफ आ रहा है तो ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट जो अपर वाला पोर्शन है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाला, तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, इसका मतलब इट्स रिटर्निंग बैक टू द ओरिजिन। शुरू में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा था, लेट्स से इट्स +5, it reduces down to +4, +3, +2, +1 and then finally becomes 0. मतलब it's back at its origin. So it's returning back to the origin, but because the gradient is constant, this means it's returning back at a constant velocity. So the way we describe this graph is that the object is moving at constant velocity back to the origin. The object is moving at constant velocity back to the origin in positive displacement. ये क्या? In positive direction. मतलब if this line represents the origin, so the object was over here, it was in the positive displacement and it's returning back. उसका displacement positive था, लेकिन वो वापस origin की तरफ आ रहा है. The graph at the bottom, displacement इसका negative है और decrease हो रहा है. Magnitude के हिसाब से देखना हमेशा increment और decrement को. नंबर लाइन के प्रॉब्लम में मत फंस जाना, क्योंकि नंबर लाइन में तो ये होता है कि वैल्यू जितनी ज्यादा होगी नेगेटिव में उतनी छोटी होती है, सही है ना। नंबर लाइन का तो ये मतलब होता है ना कि भाई जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी नेगेटिव में वो उतनी छोटी होगी। नंबर लाइन के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड के थ्रू अंदाजा लगाया जाता है कि डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। तो जब आप बॉटम वाले केस को देखेंगे तो वहां पे आपको अंदाजा होगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट इस वक्त नेगेटिव है। कैसे पता चला नेगेटिव है? क्योंकि आप ग्राफ के नेगेटिव एक्सिस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप ओरिजिन से पीछे की तरफ मौजूद है। तो जा जरूर रहे हैं ओरिजिन की तरफ, लेकिन जहां आप एग्जिस्ट करते हैं वो ओरिजिन के पीछे वाला हिस्सा, इसलिए आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है उस वक्त वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। जब आप ओरिजिन को क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे आप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाले रीजन के अंदर आ जाएंगे और उस वक्त आपके पास डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट का पॉजिटिव या नेगेटिव होना इस चीज पे बेस नहीं कर रहा होता कि आप मूव किस तरफ कर रहे हैं, इसका डायरेक्शन आपको इसके पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में नहीं बताता। डिस्प्लेसमेंट का पॉजिटिव या नेगेटिव हमेशा आपको ये चीज बताता है कि आप ओरिजिन से आगे हैं या ओरिजिन से पीछे, वो आपको मूवमेंट की डायरेक्शन नहीं बताता। मूवमेंट की डायरेक्शन वेलोसिटी के साइन से पता चलती है। डिस्प्लेसमेंट का साइन सिर्फ आपको इतना बताएगा कि वेदर यू आर अहेड ऑफ द ओरिजिन और यू आर बिहाइंड द ओरिजिन, दैट्स इट। अगर बॉटम वाला मैं ग्राफ देखूं तो मेरे पास नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आ रही है, तो इसका मतलब आई एम बिहाइंड माय ओरिजिन, और वो कम होते होते जीरो हो रही है, इसका मतलब आई एम मूविंग टुवर्ड्स माय ओरिजिन फ्रॉम द बैक साइड। मैं नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ से ओरिजिन की तरफ मूव करता आ रहा हूँ। देखिए मेरा ग्राफ अगर आप देखें तो वो ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो ग्रेडियंट है वो पॉजिटिव है लेकिन कांस्टेंट है। तो यहां पे आप कहेंगे कि the object is moving at constant velocity back to the origin in negative displacement, या in negative direction।
सही, वो origin से पीछे है. This was the origin. It was behind the origin, but it's returning back to the starting point. See, वो अपने starting point की तरफ आ रहा है. उसका displacement negative है. जब तक वो origin से पीछे है, उसका displacement negative है overall. लेकिन जो उसकी movement की direction है वो positive है. Origin की तरफ बढ़ रहा है. Is that clear to everyone? If there is any issue, you may ask. Sir, I have like one issue. Yeah, what? Yeah, my issue was when this is at the back, yeah, it's coming at the front. So won't it be called positive displacement? देखो, to call it a positive displacement, it must be ahead of the origin. मैंने अभी एक बात ये कही थी कि the sign of displacement, the positive and the negative sign of displacement, it doesn't tell you about the direction of motion. It tells you where you are from the origin. Mm-hmm. Even though you're moving towards the origin, you're moving in the positive direction. Your movement is in the positive direction, but you're still behind your origin. And unless you cross your origin, your displacement cannot be positive. Okay, so the direction of movement has nothing to do with the displacement? No, it has nothing to do Oh, with the sign of displacement. okay, it's the original displacement, correct? Is the origin displacement? The original displacement is the value, right? Exactly. The value is Okay, going to thank you. tell you the displacement, and the sign will tell you where you are from the origin. You Okay, definitely, shukriya, sir. if you're moving in the positive direction, it's like, for example, you were at -5 over here. You move 2 steps ahead. So that's like direction +2. You're still -3. You're moving Mm-hmm. towards the positive. You're getting closer and closer. Say you were -3, then you move 2 steps again further. You're still -1. So you're still behind the origin. So your overall displacement is still turning out negative. So until and unless you cross it, but if you move 2 steps further, now you'll be +1. So now you are ahead of your origin. Up displacement Okay, आपका positive हो जाएगा. okay, तो इस केस में displacement positive है ना? बिल्कुल. Okay, sir, बहुत शुक्रिया. Yeah. And now the fifth one. Things are gonna change from here. अब तक हम lines के ऊपर working कर रहे थे. Now we're gonna work on some curvature. So this is the graph that we have. See, if you look at the positive region, your displacement is positive and it's increasing as you're moving away from the origin. This means that because with respect to time, you can see that the displacement is continuously increasing. The graph is going up. The displacement is increasing and it's positive. And if you look at the bottom portion, you'll see that the displacement is negative and it's still increasing. The value, the magnitude is increasing, but the negative sign basically shows that you are moving behind the origin. You are in the negative portion of your displacement. You're moving behind your origin. But if you look at the gradient of the graph, if you look at the first part, the one where you have positive displacement, if you look at the gradient, you'll see that the gradient is falling down. The graph was more inclined at the start. If I draw a tangent over here, you can read the angle on my scale. It's 53 degrees. It's more inclined at the start, but as you move further, if I draw a tangent at the very end, you'll see the angle have reduced down to 18 degrees. So the gradient is decreasing. The graph is getting horizontal. The gradient is going closer and closer to 0. I'm talking about gradient. See, I'm not talking about the value of displacement. I'm talking about gradient. The gradient kam hota chala ja. The graph is getting horizontal with time. So this means that although the gradient is positive, it's decreasing. This means that your object is slowing down. A decrease in gradient means a decrease in velocity.
means your object is slowing down. So we are supposed to say over here that the object is moving away from origin in positive direction at a decreasing velocity. There is deceleration over here. See, yeah, deceleration. The object is slowing down with respect to time. It's moving away from the origin and it's slowing down again and again. So a time would come when your object will finally come at rest. There will be no more increase in displacement. The object will be at rest somewhere ahead of the origin, somewhere in the positive displacement region. And a similar explanation will go over here for the negative portion. The gradient is negative, see, because your graph is going down, the gradient is negative, and there is a decrease in it, because again, the graph is becoming horizontal. So the explanation is exactly the same as it was before. The only difference is that this time your object is moving in the negative direction. That's the only difference. It's moving in the negative direction at a decreasing velocity. This is also deceleration. Any confusion? Sir, I don't have a confusion, but I have one doubt to ask. Yeah, that is. What is S? I don't get what is S. The unit S, does it stand for something? What about units of what? The S over there? Yeah, the S. It's Or is it a file? displacement. It's Isn't displacement. Displacement is represented by S, and /m basically means displacement in meters. displacement का D नहीं होता? ठीक है? Okay, sir. Sure. Let's see if you guys can decipher the sixth one. Oh. बनाना ही पड़ेगा. So try to decipher the first part, the positive part of this graph. So yeah, in your chat you can write an answer in the manner which I have written over here कि भाई displacement colon आगे लिख दो, जैसे हम ऊपर लिखते हुए आ रहे हैं कि भाई it's positive and increasing decreasing. Gradient को भी आप लिख सकते हो कि भाई it's positive increase decrease, और फिर जो statement हम लिखा करते थे पूरी वो statement इस तरह से करके अपना आंसर मेंशन करो. स्टेप बाय स्टेप नहीं करना, कोशिश करना कि एक साथ मेंशन कर दूं ताकि मैं पूरा एक साथ पढ़ सकूं.
I'm getting answers now. वेलोसिटी के साइन में थोड़ी सी गड़बड़ है. ठीक है शाही, यू आर राइट अप टिल नाउ. Brilliant, Afra. Brilliant, brilliant, बेहतरीन है. So you guys have all made the correct interpretations. So let me write it over here now for the first part. The displacement is increasing and so is the gradient because the graph is getting vertical with respect to time. And if I decipher it, I'm going to say that the object is moving away from the origin in the positive displacement, or you can say in positive direction, at increasing velocity. मतलब ये acceleration का case है. It's a case for acceleration. और अगर इसी तरह हम बॉटम वाला केस देखते तो इसका बिल्कुल नेगेटिव इनवर्स होता. वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है और इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है और इंक्रीज हो रही है. एक्सप्लेनेशन एग्जैक्टली सेम. द ऑब्जेक्ट इज मूविंग away from the origin in negative direction. See, it's behind the origin, ठीक है, with increasing velocity. तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे अपने ग्राफ से रिलेटेड डिसाइफर कर ली. इट्स गुड वर्क कि आप लोगों को इस चीज के बारे में जो है वो काफी क्लियरली समझ में आया हुआ है कि किस तरह से डिस्प्लेसमेंट जो है और जो वेलोसिटी है वो वेरी कर रही है. अब तक कोई मसला इसमें? आई होप नॉट, क्योंकि जवाब तो आप लोगों ने खुद ही दिए हैं अभी. This means you guys know how to deal with these cases now. अच्छा भाई, 7th और 8 भी कर लेते हैं, उसको वाइंड अप कर देंगे ताकि ये खत्म ही हो जाएगा. फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर कंबाइन करके कुछ केसेस डिस्कस कर लेंगे. 7th केस हमारे पास ऐसा है. This is the 7th case that we have. तो अगर मैं यहाँ पे इनकी डिस्क्रिप्शन दूं तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है, इसका मतलब द ऑब्जेक्ट इज रिटर्निंग बैक पॉजिटिव एंड द डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग. जबकि नीचे वाले ग्राफ में इट्स नेगेटिव एंड द डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग. जहां तक ग्रेडियंट का ताल्लुक है यानी वेलोसिटी का, तो ग्रेडियंट भी आपके पास डिक्रीज हो रहा है. ग्राफ इज गेटिंग हॉरिजॉन्टल एंड द ग्रेडियंट इज नेगेटिव बिकॉज़ द ग्राफ इज गेटिंग डाउन, नीचे की तरफ आ रहा है. It's negative and decreasing.
And if you look over here, the gradient is positive. As the graph is going up, the velocity positive होगी, लेकिन decrease हो रही है. Velocity positive इसलिए क्योंकि वो positive direction की तरफ move कर रहा है ना. उसकी movement की direction positive है, इसलिए velocity positive हुई. अगर मैं इनकी explanation दूं, तो ये ऐसा है कि भाई if this is the origin, तो पहले वाले केस में the object is returning back to the origin from the positive direction, from the positive displacement, but in a decelerating way. मतलब वो slow हो रहे हैं और origin की तरफ आ रहे हैं. तो हम यहाँ लिखेंगे भाई the object is returning back to origin from positive displacement at decreasing velocity. जबकि जो नीचे वाला ग्राफ है उसके लिए भी बिल्कुल वैसी एक्सप्लेनेशन होगी. The object is returning back to origin from negative displacement. At decreasing velocity. ये दोनों ग्राफ्स भी हमने यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेनेशन दी. Let's do the last one and then we'll end this lesson. So expecting that you guys are now pro players, or close to pro at least. This is the graph that we have, the final graph, the last graph. So how about you guys decipher it in the exact same way you did with the previous graph, ना? जैसे पहले वाला graph explain किया था, उसी तरह ये वाला graph भी explain करने की कोशिश करो. करेक्ट आंसर बिलाल, बेहतरीन जवाब दिया आपने. बिल्कुल करेक्ट आंसर अफरा. करेक्ट आंसर शहीद. So you guys have a grip on it now. So you guys know that the displacement over here is positive but decreasing, and the gradient is negative but increasing. We can say that the object is returning back to the origin from the positive displacement at increasing velocity. और वो एक्सेलरेट करता हुआ origin की तरफ वापस आ रहा है. जबकि जो बॉटम वाला ग्राफ है उसकी एग्जैक्ट सिमिलर एक्सप्लेनेशन है. सही, बस सिर्फ फर्क इतना है कि now you are moving in the negative direction.
ये साइंस पलट जाएंगे. The displacement is negative but the velocity is positive क्योंकि gradient positive हो गया. अब आप ऊपर की तरफ आ रहे हैं. इसकी movement की direction towards the origin है, इसलिए उसके velocity positive है लेकिन displacement उसका negative. It's returning back to the origin but speeding up. I'm gonna write from negative displacement at increasing velocity. Yes, there will be a class on Thursday. क्योंकि चांद रात नहीं है, चांद रात फ्राइडे को है, इसलिए. अगर मुझे मूड हुआ तो मैं छुट्टी दे दूंगा. I'll let you guys know. ठीक है भाई, चलें. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. सही है, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात. अल्लाह हाफिज.